Good evening, all of you. Sharp 8 o'clock. So today our target is 15 marks, right? User defined function. How many of you seen the PDF that I have sent you? There I have included some program also and objective question also. No. So we will discuss one, two program. I will explain you from there, right? And the topics, all the topics like user defined function is there, right? So in user defined function, what are the topics are there? What is function and type of functions, right? How to declare the function prototype. That is important questions. All of these things, right? So we are going to discuss all these things. And apart from that, we will discuss the static function, non-static function, and also we'll discuss actual parameter, formal parameter, and example. With example, I have made in the PDF, so that also I'm going to show you. Okay. So let's start without any delay. Okay. Is this visible to you? Yes, yes, Nayan. About the topics only we are going to discuss. This topic is visible to you? No. Okay, 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 okay. Now it is visible, and so let's start now. User defined function that we saw in short, we say this user defined function. What is this? Then user defined function is nothing a method written by a programmer to perform a specific task. Yeah. 1 hour नन कोशिश करेंगे 1 घंटा है ना 9 बजे तक
सब कुछ ठीक ठाक रहा और तू लोग अगर अच्छे से इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग देन वी विल सी हाउ मच। तो चलो, यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी फंक्शन, जैसे कोई भी चीज तुम डिक्लेयर किया, सेट ऑफ कोड डिक्लेयर किया, एंड दैट कोड इज going to perform a particular task, so that only is the user defined function. We can say a set of a statement is only the user defined function, right? जो किस काम में आता है, तो कोड रीयूजेबिलिटी एंड इट रिड्यूस द रिपीटेशन। ठीक है, ये रिपीटेशन को रिड्यूस करता है। तो एडवांटेज, इफ इट विल आस्क यू, देन टू एडवांटेज यू कैन राइट अबाउट द फंक्शन: कोड रीयूजेबिलिटी एंड रिड्यूस द रिपीटेशन, राइट। नाउ एक एग्जांपल, फंक्शन कैसे बनता है, उसको कैसे कॉल करते हैं। यहाँ पे तो लोग बहुत कंफ्यूज करता है ना, कि कैसे एक फंक्शन को बनाना है सर और कैसे उसको कॉल करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए सपोज करो एक क्लास ले लिए हम, डेमो। एकदम ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है, फिर डाउट होगा तो लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो डेमो है। अब इस डेमो में क्या किया हम, एक फंक्शन, सो इनसाइड अ क्लास वी हैव डिक्लेयर अ फंक्शन void show। अब इस फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, एक सिंपल सा मैसेज, हेलो ICSE। अब इस फंक्शन को हमको कॉल करना है। नाउ वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन, राइट। टू कॉल दिस फंक्शन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डेमो क्लास। ये जो डेमो क्लास है, इस डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं हम लोग। तो कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो तुम लोग को हमेशा से पता है कि डेमो ओबीजे इक्वल्स टू न्यू डेमो। अब क्या करना है यहाँ पे, तो फंक्शन जो भी है हमारा, ये फंक्शन को कॉल कर दिया, obj obj not so। So what will be the output, can you tell me what will be the output for this program? hello ICSE, ठीक है। हम्म। यहाँ तक क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर? hello ICSE will be the output because we have called this function, right? हम्म। void मेथड एग्जांपल, एक और मेथड का एग्जांपल, ठीक है, कि void है, ये void मेथड, और फिर यहाँ पे तुमको कुछ और डेटा टाइप लेकर के हम दिखाएंगे, ठीक है। तो void अगर रहा, तो void मैसेज है, तो सिंपल मैसेज प्रिंट वेलकम, और फिर एक मेन मेथड बनाया और फिर से यहाँ पे कॉल कर दिए। तो ऑब्जेक्ट का नाम नॉट ओनली ओबीजे, वी कैन गिव एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पी, राइट। गुड इवनिंग Pranjal. Now P. So P is what? An object of this class. So if the question will be there, what is this object? So you will say object is the instance of a class. Object is nothing but it is instance of a class, instance of a class, instance of a class, which is used to create, which is used to create the object, and it help us in calling the function. So why to create object? Object we create to call the function, right? So here p dot message, here p is the object and message is the function name। ये तो क्लियर है। ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं हम लोग, हाँ हेलो मयंक, ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं टू कॉल दी फंक्शंस। अब आगे देखो, नॉन वॉइड मेथड्स, कि अगर यहाँ पे वॉइड नहीं रहा, वॉइड का मतलब पता है तुमको, कि यह फंक्शन कैन नॉट रिटर्न वैल्यू। अगर एक फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हम लोग वहां पे वॉइड यूज करेंगे। एंड इफ फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न वैल्यू, मींस वी आर गोइंग टू यूज नॉन वॉइड मेथड, राइट, जहाँ पे वॉइड यूज नहीं होगा। अब देखो इस फंक्शन में यहाँ पे इंट यूज कर दिए। अब इसको कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन दूर होना चाहिए तुम लोग का, ठीक है। कि यहाँ पे इफ यू हैव यूज इंट, अब क्या हो रहा है, सम इंट ए इंट बी, दो पैरामीटर है। अब रिटर्न ए प्लस बी, अब देखो यहाँ पे एसओपीएलएन नहीं यूज करके रिटर्न यूज कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज दिस फंक्शन, दिस सम फंक्शन कैन गिव यू वैल्यू नाउ, बिकॉज द फंक्शन के पास एक ऐसा कैपेबिलिटी है कि फंक्शन अपने पास वैल्यू को रख सकता है। और जब वैल्यू उस पर रखना होता है ना, और उसके थ्रू से रिटर्न करवाना होता है, तो हम लोग रिटर्न यूज करते हैं। और किस तरह का वैल्यू हमको रिटर्न करना है, वो ये रिटर्न टाइप यहाँ पे डिपेंड करता है, किस तरह का वैल्यू तुमको रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो चलो इंट सम इंट ए इंट बी, अब रिटर्न कर दिए ए प्लस बी को। अब अगर हम आगे देखें, तो पब्लिक वॉइड में मेथड में कॉल करने वाले हैं इसको, ऐड क्लास नेम ओबीजे इक्वल्स टू न्यू ऐड
system dot out dot println. now below sir system dot out dot println, why we have used it? SOPLN or return sum, that also can be done. अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम इसको रिटर्न करवा रहे वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू 5 पास की है ना, दिस 5 विल गेट स्टोर इन ए and this 3 will get a store in b and return a plus b. So 5 plus 3 8 means this function have the value 8 and 8 is going to return the value. nahi Ans, what you do, a plus b you store in sum. if you want to change it then s, अगर तुमको चेंज करना है स्टेटमेंट को, तो यहाँ पे इस जगह पे तुम इसको a प्लस बी को s में स्टोर करो, s को, और फिर s को तुम रिटर्न कर दो, ठीक है, बोथ आर सेम ओनली, ओके। अब ये डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट कर देगा, बट अगर हम नॉन वॉइड फंक्शन में देखें, सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रिंट दिस इन द SOPLN बिकॉज ऑलरेडी SOPLN वी हैव यूज इनसाइड द फंक्शन। तो एकदम इस चीज को क्लियर रखना तुम, ठीक है। चलो अब स्टैटिक फंक्शन का यूज देख लो, है ना, कि व्हाट इज दिस स्टैटिक फंक्शन। सो इफ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर अ स्टैटिक फंक्शन लाइक अ स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले, सो दिस फंक्शन, नो ओबीजे डॉट सम कर सकता है, लेकिन एक केस है उसके लिए कि इफ यू आर गोइंग टू डू ओबीजे डॉट सम देन दिस ओबीजे डॉट सम यू हैव टू स्टोर इन अ वेरिएबल लाइक एस। सो एस इक्वल्स टू ओबीजे डॉट सम, क्योंकि हम पता है कि ये सम फंक्शन जो है ना, ये वैल्यू को रिटर्न करने वाला है, कुछ वैल्यू तुमको देगा। तो जब तुमको वैल्यू कुछ देगा तो किसी में तुमको स्टोर करके रखना होगा ना, तो किस में स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो जिसमें तुमको स्टोर करके रखना है वो एक वेरिएबल चाहिए, या तो फिर डायरेक्टली तुम उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। यस प्रांजल, दैट ओनली। तो यहाँ पे अब आ जाओ, एक स्टैटिक एग्जांपल के थ्रू से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टैटिक में क्या हो रहा है कि स्टैटिक डेमो है और एक डिस्प्ले है, तो एक ये डिस्प्ले जो है स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। सो इन स्टैटिक फंक्शन we simply return a message. Yes, Ans, right. Good evening Sachin। अब ये जो स्टैटिक फंक्शन है जो हमारा वैल्यू रिटर्न करने वाला है, ठीक है, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि ये वॉइड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए स्टैटिक मेथड। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक में क्या हुआ बेनिफिट देखो, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट हियर, वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट ऑब्जेक्ट हियर डायरेक्टली, वी हैव कॉल द मेथड लाइक डिस्प्ले, सी डिस्प्ले। तो जैसे ये डिस्प्ले लिखे, ये हमारा आउटपुट आ गया, क्या आ गया, स्टैटिक मेथड। क्यों? क्योंकि यही तो डिफरेंस था कि अगर तुम नॉन स्टैटिक फंक्शन बना रहा है, सो यू नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट टू कॉल द फंक्शन, बट if you are going to declare a static method, so no need to create the object, directly we are calling the name directly, display, getting or not? So a static function, if you have declared a static function with a static keyword, means you are not going to create an object to call this function। यानी कि एक जो स्टैटिक फंक्शन है डिस्प्ले हमारा, इस डिस्प्ले को कॉल करने के लिए अब हमको ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इस डिस्प्ले को डायरेक्टली बाय नेम वी कैन कॉल इट। देखो डिस्प्ले फंक्शन इज देयर, सो व्हेन यू आर गोइंग टू कॉल दिस डिस्प्ले फंक्शन, सो डायरेक्टली बाय नेम वी कैन कॉल इट, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस स्टैटिक। अगर स्टैटिक यहाँ पे नहीं रहता तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता किसका, इस स्टैटिक डेमो, और फिर इस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है डिस्प्ले। तो अभी डिस्प्ले को कॉल करने के लिए वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली वी कैन कॉल इट। अब देखो नॉन स्टैटिक फंक्शन void show, दिस इज नॉन स्टैटिक फंक्शन, राइट। जैसे ये नॉन स्टैटिक फंक्शन आया ना, आउटपुट क्या होगा, ये आउटपुट आएगा स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड आएगा। यस एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड है, अब इसको कॉल करना है हमको, इस फंक्शन को शो को कॉल करना है, SHOW को, शो को। तो जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना,
तो हमको ऑब्जेक्ट बनाना होगा. सो व्हाट इज द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट हियर? ओबीजे. इन द प्लेस ऑफ ओबीजे आई हैव डिक्लेयर एन. सो नॉन स्टैटिक n equals to new non-static. Means whenever now you are going to call this function, so we need to create the object. This point is clear. Means in static function, no need to create object. With the class name, we can call the function directly with the name. But if you are going to declare a function with without a static keyword, you need to create the object to call the function. I hope it is clear to you, right? Now, actual and formal parameter. Actual and formal parameters. So when you're talking about the actual and formal parameter, ठीक है? तो चलो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल will be clear everything. Class name is parademo. यहाँ पे देखो क्या है, एक फंक्शन है void add int x y. तो ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया क्या? क्योंकि पैरामीटर डिक्लेयर्ड व्हाइल क्रिएटिंग द फंक्शन. जब फंक्शन क्रिएट करते समय जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, हम पैरामीटर किसको बोल रहे हैं? एक्स और वाई को. तो जो पैरामीटर यूज कर रहे हैं वो फंक्शन डिक्लेरेशन के समय यूज किए हैं, इसीलिए हम लोग इसको पैरामीटर बोलते हैं. कौन सा पैरामीटर? फॉर्मल पैरामीटर. बट वी नीड वैल्यू फॉर दिस एक्स एंड वाई. तो इस एक्स एंड वाई में वैल्यू हमको डालना पड़ेगा कब? जब कॉल करेंगे इसको. तो कॉल कर रहे, देखो कैसे कॉल कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट बनाया. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट नेम? पी. सो पी डॉट एड. नाउ टू वैल्यूज वी हैव गिवन 4 एंड 6. तो ये जो 4 है वो कहाँ पे स्टोर हो गया? ये 4x में स्टोर हो गया. ये 6 जो है कहाँ पे स्टोर हो गया? ये y में स्टोर हो गया. तो x और y का वैल्यू क्या हो गया? 4 और 6. Then 4 and 6 will get printed. 4 plus 6, 10 will be the output. So actual parameter always copied to formal parameter. One thing you remember, right? Actual parameter is always copied to formal parameter. Will you remember this? Values directly here. Where numerical or character value? Character value we can give, and variable also we can pass here, right? Like a and b. But before that, a for this a and b we need to declare here, right? जैसे अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है. int x equals to 4 और y equals to 6. अब इस 4 के जगह पे हम x लिख दे रहे हैं और इस 6 के जगह पे y लिख दे रहे हैं. तो भी वही हुआ. ये भी तो एक्चुअल पैरामीटर हुआ ना. while calling any parameter you have used, that is the actual parameter. So actual parameter will be copied to formal parameter. I hope it is clear to you. ठीक है. चलो, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, ये जो पैरामीटर होते हैं दो तरह का होता है, ठीक है. यहाँ पे वैल्यू टाइप भी पास कर सकते हैं और रेफरेंस टाइप भी पास कर सकते हैं. सो द वे ऑफ कॉलिंग द फंक्शन इज ऑफ टू टाइप. वन इज कॉल बाय वैल्यू एंड वन इज कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस. तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है सोच समझना, ठीक है. कि कॉल बाय वैल्यू जो होता है ना, कि यहीं पे समझो इसको, कि एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू फॉर्मल पैरामीटर और any changes made in formal parameter will not reflect to actual parameter. Not reflect. अगर नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो वैल्यू टाइप हो गया. वो क्या हो गया? वैल्यू टाइप हो गया. और अगर रिफ्लेक्ट कर रहा है, इफ देखो एक्चुअल पैरामीटर कॉपी टू formal parameter or any changes made in the formal parameter will reflect to the actual parameter is pass by reference. So this is the major difference between pass by value and pass by reference. Okay, you remember it. Okay, कॉल बाय वैल्यू में क्या बोला कि एक्चुअल पैरामीटर कहाँ पर कॉपी होता है? फॉर्मल में. इफ एनी चेंजेस विल बी इन द फॉर्मल, कोई भी चेंज हो रहा है फॉर्मल में, दैट विल नॉट रिफ्लेक्ट टू एक्चुअल. So that is called by value. And if any changes made in formal and it is going to reflect actual, so that is called by reference. Okay, तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू हम 5 से बढ़ा दिए. तो x का वैल्यू क्या हो गया? देखो क्या हो गया यहाँ पे 10. a का वैल्यू क्या है? 10 है.
अब यहाँ पे ए पास कर दिया, अब ए किस में कॉपी हो गया, तो ए जो है ये कॉपी हो गया तेरा एक्स में, ये कॉपी हो गया एक्स में, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 10, और 10 + 5, अब एक्स का वैल्यू क्या हो गया 15, 15 हो गया वैल्यू किसका, एक्स का। लेकिन ए का वैल्यू में कोई चेंजेस आया क्या, अगर तुम यहाँ पे ए का वैल्यू प्रिंट करेगा तो आउटपुट क्या मिलने वाला है तुमको, 10 ही मिलने वाला है, नो एनी चेंजेस, नो एनी चेंजेस इन द एक्चुअल वैल्यू, only the formal value got changed. So this is pass by value or call by value. Clear? रेफरेंस का एग्जांपल तो लोग बोर्ड में पढ़ना नहीं है, इसलिए डेफिनेशन याद रखना, इसलिए ज्यादा टाइम पास काहे करेगा उस, डेफिनेशन याद रखना कि कॉल बाय वैल्यू में अगर चेंजेज हो रहा है कुछ फॉर्मल में तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और कॉल बाय रेफरेंस में अगर एक्चुअल में अगर फॉर्मल में चेंजेस हो रहा है तो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट करेगा। So that is the final thing that you need to remember, right? And the very important topic method overloading, यहाँ 15 नंबर और एक 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने वाला है, ठीक है। Array is the example. If you will say, then I can show you the reference type example in Blues. It will take 5 minutes time. Are you going to see the example or what? Reference type example you want to see, Ranjit? Okay. Then okay, then I'm going to show you it. No, no, cancelled. I think we are busy in examination and all. Tomorrow exam is the practical exam is there. So let's see now. Okay, without any discussion, just see once the reference type example. Okay, so I'm going to give you the reference type example quickly. So both I will give you. First value type I'm going to give you. Okay, so just think int demo, and here int a, right? Just try to understand. And I'm going to increase this value a equals to a plus 10, right? Now I'm going to create a main method, right? Main method. So public static void main string args. I'll try to write it quickly because I can understand. You have to wait, but you see this example, okay? And the students, now in this a formal parameter we are going to declare. So the formal parameter will take one variable p, and p I'm going to take 100, right? So now I'm going to create object of this my class. So my class obj equals to new my class object we have created. Now we are going to call this function. So when you are going to call this function, so actually here is return type, no, so here we can write here int a, return a, sorry, return a, because the return type, so we need to use this keyword return. Okay, now we are going to print this system dot out dot print ln. I'm going to, or simply what I will do, I will call this function, just simply I'm going to call this function. So a equals to one variable, I will make int a equals to
obj dot demo, and in this demo I'm going to pass p. So what is the value of p? And here I'm going to print system dot out dot println. I'm going to print a equals to plus a, and system dot out dot println p equals to plus p. See, the once you see the output, what will be the output? Can you imagine now? Just you just find out what will be the output, what will be the value of a, and what will be the value of p. First, the value of a will be, because this 100 we have passed here, so this 100 is the actual parameter. This actual will be copied to formal. So the value of a got changed 110, but the value of p will remain 100 only. That only I'm going to show you. Okay, see. This is value type. See, the value of a got changed. The value of p we have copied in a, but a changed, but p is not going to change. P is still the same. P is 100 only. So this is value type. That only I told you, that any changes made in formal will not reflect to actual. But now what I'm going to do, I'm going to give you the example of reference type now, right? Example of reference type. So what I will do, I will make it array, because array is a reference type, you know that. So I made it array. Now in array, the each value I'm going to increase. So we need loop to increase each value of the array. Int I equals to 0, because index start from 0, and how many values are there we don't know. So a dot length, a dot length, and I plus plus, right? And I'm going to increase ai equals to ai plus 10, right? This return non-returnable function I'm going to make. So I will take void here, void. So void demo int a is the array, and ai equals to ai plus 10 means how many values will pass there. Each value we are going to increase by 10. Understood the meaning of this? No. What I'm going to do, I'm going to take another array now, p. In this p I'll put some values like 100, 200, 300. So three values I have given, right? 100, 200, 300. So what is the value of p? The value of p is 100, 200, 300. When it will increase, the value of a will increase by 10. So now when a will be passed, so now I'm going to print the values, right? So for int I equals to 0, I less than 3, I plus plus, because now we know the length 1, 2, 3, so less than 3, and I'm going to print the value of p, right? Now value of p I'm going to print. See, which value I'm going to print? P. So a student, this p we have passed to the reference type. Just here only, and reference type will be clear. Okay. This p we have passed to a. We have increased the value of a, and any changes made in formal, we are changing the formal, but we are printing the actual. See the effect. Okay. See the effect first. Then I will tell you one more thing. What is the answer? See, are you getting? We have printed the value of p. P is the actual value, actual parameter copied to formal, and any changes in the formal is going to reflect in the actual. Yes or no? Getting or not this point?
Hence, see now, this P we have passed to this P, this is array, we have passed to A, and we have increased the value of A, and we are going to print the value of P. Because students, see here we have not passed the array, you have not noticed it, notice it here. Okay, here we have not passed this array, we have just passed the reference. When you will pass the reference, no, so suppose you have reference. Okay, now I will come to that point. Okay, in this PPT I'm going to come. Where is the PPT? See, reference. So suppose one P is there and A is there, right? A. So what we have done, we have used this P directly in A. Address we have used. Address. So what is the address of P? That only is the address of A. Yes, Mirganko, student Mirganko is as a friend only. He was studying with me in university actually. So that's why he is telling Manobal. Don't be confused. So P we are going to store, in address we are going to store. So in address we have changed the value. So ultimately the value of P also will get changed. No, understood? Clear? No, the example is clear. Now we'll move to the next point. Okay, method overloading. So now method overloading. Method overloading, a student, as name suggests, method we have multiple functions with same name but different parameter. Multiple function with same name, different parameter. So multiple functions are there. See, add two functions. Add. See, the same name. Name is same. Add here also, add here also. So multiple two functions with the same name. But parameter is what? Different. A and B. And here parameter is what? 3. So number of parameter is different. So two parameter here, three parameter here, right? And we are going to print the value A plus B, A plus B plus C. Now, this is the example of method overloading. You remember it, right? Method overloading. So now when we are going to call this function, so object is O. So O dot add 2, 3 means which function we are going to call? The first function we are going to call, this one. And when you are going to use O dot add 1, 2, 3, so which function we are going to call? We are going to call this function, second one. You remember this, right? So this is the things that you need to remember. Yes, direct use change. Okay, so this is the things. Now important program. Now how many program you have done? Just tell me that. Or one program first I will show you. This program. Write a program to input a number. This is a very important program. Like this program only coming in the examination. Okay. So write a program to input a number. Use a function int Armstrong int n to accept the number. The function return 1 if the number is Armstrong, otherwise it will return 0. Okay, so one program I'm going to show you. What function will return? The function will return 1 when the number is Armstrong. Armstrong number, you know? Armstrong number? Okay. Armstrong number. Suppose we have 371. That example already we have given 370. So cube of each digit, right? So already you have done. Once you try it. Now this one. If you'll say, I will do in the blue zone. This question. Yes, sum of cube of the digit for the Armstrong number is okay, fine.
This one also done. This one, this PDF, you just try it once, okay? This all things were there. 5, 6, 7. This program you have to do. This program you try to do. 8, 9, 10, 11. This 11 questions you try to do, okay? And if in doubt, we will explain it later on, okay? So now you come to the next, that is objective type. I hope this also you have done. So the keyword which indicate that the method returns no value. So if the function return no value means it is void, okay? If a function is going to return no value means this is void. This is void, right? And method which is a part of class rather than this, I have asked in your examination, right? And already came into 2023 in PYQ, from PYQ I have given you. Okay, so a method which is a part of class rather than an instance of the class is termed as. So instance of the class. See the question, which is a part of a class. It is a part of class, but it's not an instance of a class. So part of class means what? A static only, no? Clear? A static. Question number 3. A method needs to be called with the help of an object. Which method? Just now only I have explained to you and already came in 2022. Which method? So method need to be called with help of an object. So void, class, non-static, no doubt non-static methods. Correct. No. An object, a student is created and the program tries calling a non-static method so details without creating an object. What will happen? See, a student is created the object, right? But you are trying to call non-static method so detailed without creating an object. Is it possible or what? Compile time error, because you cannot call non-static method without uh, creating object. Okay. A method which does not modify the value of variable is termed as. I told you a student pure and impure, that is pure is just like value type and impure is just like reference type, okay? So I told you that in value type the value will get changed, sorry, the it will not reflect to the actual parameter. In reference type it reflect to the uh, actual parameter, right? So when you are going to see this, when you're going to see this variables, a term, so impure method, pure method, so does not modify the value means does not change the state of an object is the pure method, right? Don't be confused on that, right? Now method which reverse a given number, method which reverse a given number is what? I think it's question missing, some part is missing here, right? Reverses a given number. It's possible that a constructor, destructor is not concept. Okay, so impure reverses means any changes made it affect the actual parameter. Possible answer is this, but let me check this question. Okay, impure method. If you'll move forward, parameter use in the method call statement are. Parameter use method call statement when you are calling the method and that parameter is what? That is actual parameter, okay? No doubt on this. The number of values that a method can return is, a method can return only one value at a time, student, okay? But we can use multiple return statement on that, but only the first one will get executed, okay?
This question, write a method prototype name check which takes an integer argument and return char. तो which takes an integer argument, तो integer जहां पे लिखा होगा ना कि ये वैल्यू इनपुट ले रहा है उसको तुम पैरामीटर में रख देना, ठीक है। तो पैरामीटर में रख दिया int x, तो यहाँ पे भी int x है और यहाँ पे भी int x है, ये तो चला गया तेरा। अब बचा 3। अब क्या बोल रहा है, टेक एंड रिटर्न कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कहाँ रिटर्न टाइप में है, तो यहाँ पे देखो ये आंसर आ गया था। समझ पा रहे हो, क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग और नॉट। Come to the next method prototype for the method compute which accept two integer argument and returns true or false. Integer arguments are return true and false. Method compute. Compute is the name. Compute, right? And accept two integers. So integer int a, int b, int a, int b. This is wrong. This is correct. And return boolean. So where is the boolean? Boolean. This is the boolean. This B capital is wrong. So option B is the right answer. Correct. Invoking a method by passing the object of a class is termed as call by reference. Just now only we have discussed. If you are passing the reference, no, so this is call by reference, right? This is call by reference. No. 13 diagram was there actually, but I have not included. So before execution, int a, int b, a is 5, a is 10. After execution, what will be there? So Java uses call by reference. Java always return a modifier. Java swap method must be started. Java uses call by value. Changes are made to copies. For swapping, which Java concept we will use? Why do the original value not change after the method call? Because original value is not changing in where? In call by value. In reference, the original value will get changed. So call by value, the from this only you get the point. Okay, why do the original value not change after the method call? Because Java uses call by value and changes are made to copies. So changes are made in the copies, not in the original value. So that is call by value, right? What is this technique called? Add int a b, add int a b c. Just now only we given to you the question. So this is what method overriding, method hiding, method overloading, inheritance. So no doubt it is method overloading. Okay, and which of the following pair of methods will cause a compile time error due to incorrect method overloading? So which one is the incorrect method overloading? That we need to see. Incorrect method overloading, if you'll see, then we have void test a b, void test double a double b, okay, correct. Int a b, double a b, okay, this also correct. A, int a double b, int a, this also correct. See here, int a, I told you that parameters should be different. Parameter should be different. So where is the parameter different? In T, it is same, so that's what the answer will be D. So I hope it is clear to you, student. Function, right? You try to understand the concept. If any topics you will not be able to understand, right? So next class, you just tell me. I will come back again and I will explain your doubt, okay? Return type not understood. Return type is nothing. Of return type means what? If you are going to return a function, it return a value through the function, right? Then return type no matter. Ans. Whatever the return type is there. Return type is not the matter of that. Okay.
Return type, it will be same, it will be different. In function overloading, the return type is not a problem at all. Just remember it, okay? Okay, so next class now we'll discuss, okay? So all the best. You start studying now.